Hello everyone, so I am back at the Pune airport. This time I'm off to Udaipur to drive the new i20 Nline. You see that store at the back? I don't know if you can see it with the people here at Cafe 2.0. Most stores here on the Pune airport are not accepting contactless payments. No Paytm, no QR codes, no UPI, nothing. They just want cash or card. And I don't know why in today's times they're still not doing contactless payments. I hope they do that. Anyway, so आज की trip is going to be to Udaipur, i20N, Nline, not i20N. In fact, that is what a lot of us were hoping, that Hyundai will also bring us the i20N. लेकिन क्यों नहीं लाई वो गाड़ी, क्यों Nline और क्या अलग है Nline में, that is in the Indian market, ये मैं आपको बताने वाला हूँ. लेकिन उसके पहले हमें उदयपुर जाना होगा because I have not gone to Delhi to cover the launch. So I have not seen the vehicle in person. सिर्फ फोटोज़ देखे हैं मैंने जो ओवरड्राइव पे थे. माय कलीग बर्ट्रन डिसूजा, द एडिटर एट ओवरड्राइव, उन्होंने वॉक अराउंड किया था उस गाड़ी का. सो आई एम रियली इंट्रिग्ड टू गो एंड सी व्हाट दिस Nline इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि इंजन तो वही है, द 1 लीटर GDI टर्बो पेट्रोल. इट ऑल्सो हैज़ द DCT ट्रांसमिशन, लेकिन जो सस्पेंशन सेटअप है, जो ब्रेक्स हैं, उसमें ट्यूनिंग डिफरेंसेस हैं, स्टीयरिंग को ट्यूनिंग डिफरेंसेस हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम टोल्ड. So I'm really intrigued to find out what the new Nline is all about. So off to Udaipur. Well, the flight is delayed a little bit, so yeah. In the meantime, I'm going to answer a few questions that I've got on WhatsApp. One question is, I need your opinion about the automatic gearbox on the Jeep Compass. Also, is Jeep here to stay or likely to wind up like Fiat? The answer that I'm going to give him is, yeah, the automatic is actually quite good if you're into, laid back city and highway drives. And this, I'm talking about the diesel automatic, not the petrol DCT. The petrol DCT on the Compass is the one to avoid because the fuel economy is just terrible on that. Nothing great about that package. The diesel is the one to go for, diesel automatic. Yeah, like I said, for highway cruising, city commutes, excellent. But if you're an enthusiastic driver, you want that punch from the engine, the manual feels a lot punchier. With that same engine, same tune, the manual still feels a lot punchier. And if you're an off-road enthusiast, if you're going to be driving on trails often, then again it's the manual that you want to go for. Is Jeep here to stay or likely to wind up like Fiat? Well, it's still the same company technically, so they haven't really wound up, but yeah, the brand has wound up. Fiat isn't selling anything in India anymore, but I doubt if Jeep will do that. I really hope that they get that entry level compact SUV that they are looking at. I hope they get that very soon. And by entry level, I don't mean it's going to compete with the likes of the Tata Punch or the Brezza or any of those. It's entry level for Jeep, so they are essentially looking at making that Creta rival, the Kia rival, the Seltos rival. That is what they are looking at making. The Compass usually would have been the obvious choice against these vehicles, but the Compass now resides in a much higher bracket because after the facelift it's got really pricey. So yes, they are making that vehicle and I hope it's here soon. It was supposed to be here last year, but then the pandemic happened and we all know what happened after that. So let's hope that it comes out soon. The plan is still on, it's under development, and hopefully in the next year or two we should have that vehicle here. So I don't think Jeep is going to wind up in India. I think they are here to stay, and I hope that their next product is going to be very promising. And by next product, I don't mean the 7-seater Jeep Compass. I'm basically talking about the Creta rival. And the other question is about the i20 Nline. What do I think about it? Well, that's what I'm going to be driving. तो वो चलाने के बाद ही मैं बोलूँगा कि गाड़ी कैसी लगती है. But I think it looks quite promising. So yeah, let's wait till the gates open and I can fly. एक प्लेस है 15 किलो सामने से
ओ अच्छा वो है तो साइड पे से सिटी प्लेस से लीला होटल है। हाँ ओके वो जो दिख रहा है वहाँ पे हाँ जी सर, तो सिटी प्लेस से बड़ा वाला सर, उसके हाँ। पास में ही है सर लीला होटल। वो हाँ हाँ हाँ, देखो। भाई साहब ये प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है? तो 2 साल 2 साल। बट मतलब ऑपरेशन कब चालू है? अभी चालू हुआ कि चालू होके 2 साल हो गए? अच्छा कोविड से पहले हुई थी चालू। ओके। So that of course is the car that I'm here to shoot, and we'll be driving it tomorrow. But I think this blue color really stands out. That's the same color with which Bird did the walk around. If you haven't watched it, go to youtube.com/odimag right away. Take a look at it. And that's the car. You can see all the badging, the Nline badging, the red accents. And I think it's a lovely weather today with the clouds coming out. And in that, this blue color really stands out. Don't you think so? So this is the i20 Nline, and of course that is signified by the badging, the communication color, which is this blue color. और जो आपको यहाँ पे नीचे 2 एग्जॉस्ट टिप्स दिख रहे हैं, दैट इज़ अनदर बिग डील. तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, इसमें काफ़ी डिफरेंट साउंड प्रोफाइल भी मिलेगी आपको कंपेयर टू द i20. राइट नाउ आई डोंट हैव द कीज़ टू दिस कार, नहीं तो मैं चालू करके अभी आपको दिखा देता इसकी साउंड प्रोफाइल कैसी है. जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो भी अलग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेयर डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं आपको. सो स्पोर्टी वेरिएंट है, तो इट हैज़ द ब्रेकिंग हार्डवेयर टू मैच. देन यू सी द रेड एक्सेंट्स नीचे, Nline की बैजिंग अगेन. सोलह इंच के रिम्स हैं ये. एंड यू ऑल्सो सी जो ब्रेक कैलिपर्स है उसको रेड कलर दिया गया है, अगेन फॉर दैट स्पोर्टी टच. फ्रंट एंड तो काफ़ी रेगुलर i20 के साथ मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप डिटेल्स देखोगे तो फट से आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंसेस क्या हैं. जैसे रेड एक्सेंट्स तो हैं ही, और ये जो ग्रिल है वो अलग है. एक चेकर्ड फ्लैग वाला पैटर्न उन्होंने यहाँ पे दिया है, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ द शेप. वाइट एंड ब्लैक नहीं है ये. आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ हाईलाइट्स हैं, बट दिस इज़ अ कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक. और यहाँ पे आपको Nline की बैजिंग मिलती है. और जो फॉग लैम्प का हाउसिंग है वो अलग है. ये जो पूरा डिज़ाइन यहाँ पे बना है ये काफ़ी अलग है कंपेयर टू दी रेगुलर i20. एंड यू गेट ऑल LED हेडलैम्प्स ऑफ कोर्स. तो कल जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे, आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ द इंटीरियर. आई विल ऑल्सो शो यू द साउंड प्रोफाइल ऑफ द एग्जॉस्ट. तो प्लीज़ हैंग अराउंड टिल देन. सो दिस इज़ अ फेयरली न्यू प्रॉपर्टी. काफ़ी नई प्रॉपर्टी है, सिर्फ 2 साल हुए हैं इसको चालू होके. देन द पैंडमिक हैपेंड, तो ऑब्वियसली वी हैवेंट विजिटेड दिस प्रॉपर्टी बिफोर दिस. ये पहली बार हम यहाँ पे आए हैं. दिस इज़ कॉल्ड द ओरेका बाय लेमन ट्री. उदयपुर के आउटस्कर्ट्स पे है. इट इज़ वेरी क्लोज टू द ताज अरावली दैट वी स्टेड एट. टाइगुन के लिए हम लोग यहीं पे आए थे, ताज अरावली. एंड देन वी वर ऑल्सो देयर फॉर द Hyundai ग्रैंड i10 ड्राइव टू एट ताज अरावली. एंड नाउ वी आर हियर फॉर द i20N. काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है. तो जैसे ही मैं आया, माई कैमरामैन केम इन फ्रॉम मुंबई एंड आई केम इन फ्रॉम पुणे. और जैसे ही मैं आया उन्होंने पहली चीज़ यही बोली कि उदयपुर का जो ओबेरॉय उदय विलास है, दिस वन फील्स बेटर दैन दैट. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, क्योंकि द उदय विलास इज़ अ वेरी 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 बिग प्रॉपर्टी. इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, वोटेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ अराउंड राजस्थान, एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट.
And now I'm going to go check out the rooms here क्योंकि उनका कहना है कि because of the view, that is what makes the rooms better. So let's go check it out. Of course, that is going to be the view. Hopefully, that is a view for his room. मुझे नहीं पता मेरे room से क्या view है. So let's go check it out. So this is the lobby to the uppermost section of the hotel, and I am on the second floor as per that board there. Old school design for the lift. This lift reminds me of one hotel I stayed at in Texas. It had a very similar lift. Anyway, up on the second floor. That's the driveway from where we came. That's the i20, people shooting it. See, I really like it when hotels do this, when they actually do not destroy the stonework much. They build around it, they retain all this. I really like it when they do it. Big lobby. Speaking of checkered flag patterns, we have one on the floor as well. Wow. Imagine walking over here all alone at night. Not for the weak-hearted. Certainly not for the weak-hearted, especially those who believe ghost stories. There are plenty of them in Rajasthan. Great. Okay then. Let's switch on the lights. Wow, it is indeed a good looking room. So the rooms at Udaipur are bigger than this, but I understand what my cameraman was trying to tell me, what Lalit was trying to tell me. That's the view that he was talking about. Beautiful. Just beautiful. This almost fell, sorry. So this almost feels like a picture frame. Look at that. So beautiful. Some chocolates by Hyundai, but no, I'm off sugar. At least trying to be, though they look tempting. And that's the bed. Beautiful property indeed. Of course, it's brand new, so it looks even better, smells better. I also like how they have made this little frame for the television. Nice. I like it. Good morning, everyone. It's time to head out and drive. Yeah, this place is certainly not Oberoi Udaipur. Udaipur is in a class of its own. Fine little things, you know, the little changes in the architecture, the little differences in the way everything's built. Udaipur is different, right? But I don't want to take anything away from this place. It's a lovely place. It's a lovely stay. I had a very short time here, of course, but I quite enjoyed that little time that I had here because the property is big, the property is grand, and the lift is silent. Didn't realize I've reached, but yeah. And the views. Come here for the views. It's basically for the views that you will come here. The elevation certainly helps.
Wish I had more time on my hand to go explore this property. I'm sure most of the videos that will come out of this property are going to be these kind. Everyone trying to capture the elevation of the place, and it's the elevation that makes all the difference, because that is what gives it the kind of views. Of course, the views are also great because it is outside of the city limits, so you get a nice clean view. You don't have the hustle and bustle early in the morning. That's something that you do in the Udaipur villas, because you step out and it's the city. So there are pros and cons to it. So you want to relax, you want to go away from the city, and you want these great views. That's what you want to come to this property for. So that's the lineup of cars early in the morning. Red color cars, white color cars. So the red one doesn't get the red accents, of course, because it would just look like a mismatch. The white one gets them. That's not the dual tone combo though. You can also have a black roof. But the signature color, of course, is the blue. And I'm guessing that's what I'm going to be driving. We have to look for car number 9, 12, 11, 10, 9. That's the one. I can already see somebody's bag inside, so just need to figure if that is my car or not. Wonder if it's Lalit's bag. So yeah, we are in car number 9. We have car number 15. तू ये लेना ये आपका है? हाँ, this is what I was going to get into. You take this. अच्छा. The DCT. Okay, I'll take the IMT. cool. So Bert's driving the DCT. I'll drive. No, Bert's driving the IMT, and I'll drive the DCT. So car number 9 it is. Which was your phone? 15. So that way we'll drive both the variants, and we'll be able to give you a more detailed opinion, detailed review on the vehicle, the i20 Nline. So car number 15 is the IMT, and that is what Bert will be driving now. So I like how they have nicely made sure that it has the covers. It's been nicely sanitized. No one's touched the vehicle now. Cleaned, kept ready. And I'll be the first one to drive it now. I like how car makers are taking it seriously while many others aren't. And all car makers are doing this kind of stuff, so I'm glad that, you know, we are being responsible. So this is in fact the first time that I'm seeing the cabin of the Nline. Let me just remove the cover. Right, so definitely doesn't feel like genuine leather. This is art leather, but I like this pattern. The red stitching also looks nice. I think they should have done red seat belt as well. You know how they gave us colored seat belts in the Santro? I think they should have done red seat belts as well, or at least had it as an option. So there's ambient lighting there. Not sure how much of it we'll see during the day, but there is ambient lighting there. There's ambient lighting in here as well. Red ambient lighting to go with all these red accents. And these are the teams that are keeping the car clean. Thank you so much, sir. Because there's a lot of dew early in the morning,
तो ये सब लोग हमारी गाड़ियाँ क्लीन रख रहे हैं ताकि शूट में काफ़ी अच्छा दिखे। शुक्रिया जी। So I honestly think the blue color really stands out. It I think looks quite nice. The white is the other color that I really like. The red not so much because the accents, the grey accents just don't look as sporty. And this, like I told you, this is the dual tone option. I think you can also have a black roof on the white color car, and I think that white car with the black roof and those red accents really looks good. But if you want to stand out, because there are already a lot of regular white i20s with a black roof, I'm sure with this car coming out, a lot of people will do these red accents as well. So if you really want to stand out, I think this is the color to get. It goes with the philosophy of the Nline. So yeah, I think this is the best looking color, if you ask me, in the i20 Nline. Apparently this exhaust note can only be heard at low revs. High revs is nothing. Little bit on the इनिशियल थॉट्स, आई थिंक थोड़ा ट्यूनिंग चेंज होना चाहिए था गाड़ी में, सिंस इट इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स द एंथुजियास्ट ड्राइवर. थोड़ा ट्यूनिंग चेंज होना चाहिए था. अगर ट्यूनिंग चेंज भी नहीं कर रहे थे तो एटलीस्ट ड्राइविंग मोड्स तो होने चाहिए थे, यू नो, इको मोड, स्पोर्ट मोड, वैसा कुछ होना चाहिए था. क्योंकि जैसे मैंने i20 के रिव्यू में कहा था ओडरे पे कि जो लो एंड टॉर्क है, जो लो एंड परफॉर्मेंस है DCT का, इट्स नॉट दैट ग्रेट. टिल अबाउट 2500 RPM कुछ इतनी पावर नहीं आती है. इट फील्स लाइक देयर इज अ प्रॉपर टर्बो लैग, प्रोनाउंस टर्बो लैग फॉर दैट मैटर. और वो बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाता है जब सिटी कंडीशंस में, इतने क्राउडेड कंडीशंस में चला रहे हो और आपको कोई गैप मिल जाती है, आपको क्विकली एक ओवरटेक फुल करना है, या फिर हाईवे पे चला रहे हो. राजस्थान हाईवेज आर ऑलवेज क्राउडेड, और थोड़ी भी गैप मिल जाती है और आपको क्विकली उसको गाड़ियों को ओवरटेक करना है. इफ़ यू आर अंडर 2500 RPM तो वो पावर बनने में, बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है. गियर बॉक्स कभी कभी जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करता है. सेम थिंग विद द गियर बॉक्स. पैडल शिफ्टर्स तो दिए हैं, लेकिन अगर आप 4-4,500 RPM के ऊपर हैं तो ये डाउन शिफ्ट नहीं करने देता. बिकॉज एवरी टाइम यू डाउन शिफ्ट अराउंड 2,500-3,000 RPM से रेव्स बिल्डअप हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं. इट डजंट डू अ प्रॉपर रेव मैच. और उसकी वजह से होता यह है कि टू प्रिवेंट दैट रेड लाइन फ्रॉम हैपनिंग, टू प्रिवेंट द लिमिटर फ्रॉम किकिंग इन, वो आपको डाउन शिफ्ट नहीं करने देता. यू हैव टू वेट टिल द रेव्स आर अंडर 4,000 RPM, और उसके बाद ही आप पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर सकते हो और डाउन शिफ्ट कर सकते हो, विच आई थिंक इज़ अ बिट ऑफ अ डाउनर. वो जो एंथुसियास्टिक पैकेज होना चाहिए वो वैसा नहीं लगता इस गाड़ी का. सो दैट्स माई ओनली प्रॉब्लम विद इट. बट अगर आप प्योरली गियर बॉक्स पे डिपेंड होके, उसके खुद के शिफ्टिंग पे डिपेंड होके आप गाड़ी चलाने वाले हो, देन इट्स अ नाइस इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन. 120 हॉर्स पावर है, सो इट नेवर फील्स अंडर पावर्ड एज सच. इट्स अ नाइस कार, इट्स अ नाइस पैकेज.
जो एग्जॉस्ट साउंड उन्होंने चेंज किया है दैट्स ओनली इन द मफलर। तो जब आप थ्रॉटल स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग जब थ्रॉटल दबाते हो और जो साउंड एम्पलीफिकेशन होता है उसमें थोड़ा सा डीले है 1-1.5 सेकंड का, सो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगता है। लेकिन आइडलिंग आरपीएम पे या जब गाड़ी चालू करते हो दैट टाइम यू गेट दैट नाइस बबल फ्रॉम दैट एग्जॉस्ट। क्रैकल्स एंड पॉप्स नहीं है। अगर आप मिनी कूपर या फिर पोलो जीटीआई जैसे क्रैकल्स एंड पॉप्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब नहीं है इसमें। यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ लाउड नॉइजेस फ्रॉम द एग्जॉस्ट। It's still pretty normal, it's still pretty muted. After all, 3-cylinder engine hai, so there's only so much that you can do with the sound engineering of this car, and I think Hyundai has done a pretty decent job with it. जो stiff suspension है that is going to be a problem for a lot of people, क्योंकि जो गड्ढे हैं या फिर थोड़े भी जो undulations आते हैं रोड में, गाड़ी को एक फ्लोटी फील देता है। काफ़ी सारी मूवमेंट है कैबिन की, यू कैन सी द साइड टू साइड मूवमेंट इवन विजुअली जब गाड़ी को बाहर से देखते हो। तो उस स्टिफ सस्पेंशन के कारण इट ट्रैक्स ओवर ऑल दीज अंडुलेशंस कॉन्स्टेंटली एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट दैट फ्लोटी फील इनसाइड द कैबिन। लेकिन जैसे ही आप कोई वाइंडिंग रोड्स पे चले जाओगे या इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है गाड़ी की, इट्स अ मच बेटर इंप्रूवमेंट कंपेयर टू द रेगुलर i20। इवन एट स्पीड्स एट 150-160 इसकी जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। रोड होल्डिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी की। The other good thing is all the safety systems that Hyundai has on offer for the i20, they are all there on the Nline. They are standard, मतलब अगर N6 भी trim choose करते हो उस पे भी सब safety systems standard हैं। You get ESC, you get all the airbags, so all of that is standard. The good thing about the Nline is you get 4 disc brakes. आपको रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा शॉर्टर है कंपेयर टू द i20, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो ब्रेकिंग फील है वो काफ़ी डिफरेंट है। ब्रेक पेडल फील ज़्यादा शार्प लगता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है कंपेयर टू द i20। So if you are looking for that sharper braking response, this is the one to get because of the additional 2 disc brakes that you get. Otherwise I think it's a very nice package. Steering भी काफ़ी बढ़िया है। इसका जो steering tuning इन्होंने change किया है वो काफ़ी बढ़िया है। So I like that. I've liked how Hyundai has been improving its steering systems over the past 3-4 cars that we've driven, and now this is the best example of it because tuning change काफ़ी evident है। वो जो एक vague at center feel था वो भी चला गया है। You have a more direct feeling steering, and with the paddle shifters it also feels nice to hold. IMT वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स ऑब्वियसली नहीं मिलते, तो उसका जो द स्टीयरिंग फील अ लिटिल डिफरेंट टू होल्ड, यू डोंट गेट दैट स्पोर्टी फील फ्रॉम इट, बट अदरवाइज इट्स अ नाइस स्टीयरिंग डिजाइन एज वेल। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द पैकेज, क्योंकि जो आप एडिशनल कॉस्ट भरते हो इस पैकेज के लिए, you are getting a lot more features for that. What do I feel about the suspension? How do I feel about the handling? What do I feel about the engine? What do I feel about the gearbox? Everything I've said in my review, so definitely उस review को check कीजिएगा. It's on youtube.com/odmag, so don't forget to check out that review. And if you have any queries about the vehicle, please drop them in the comments. I will join the discussion myself. I will reply to all your queries. And like I always say, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel already. Please share this video with your friends and your family. Get them to share the video as well. It will only help us get bigger numbers for the video, and once we get bigger numbers, we'll feel more motivated to bring you more content like this. If the numbers keep going small, we lose motivation. So please don't do that. Please keep hitting that like button and keep sharing all our videos, and do subscribe to the channel. Thank you so much for watching.